जब से मैंने देखा है मेरे को प्यार हो गए. Hi guys, welcome or welcome back to my channel. This is your brown girl. If you're seeing this face for the first time, I'm the brown girl. I make content related to fashion, makeup and lifestyle. So if you have not subscribed my YouTube channel yet, go subscribe right now. Also hit the bell icon so that whenever I'll post something you'll get the notification. So बहुत हो गई हॉल वीडियो. इस वीडियो में मैंने सोचा था अब कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाए, तो चलो लेट्स सी व्हाट आई डिड. सो ना मेरे को ब्लिंगी आउटफिट्स बहुत पसंद है. सो आई एम ऑलवेज इन हंट ऑफ ब्लिंगी आउटफिट्स. सो आई थॉट लेट्स व्हाई नॉट क्रिएट वन. सो कुछ टाइम पहले आई वाज स्क्रॉलिंग ऑन Pinterest and at night, at midnight, I saw few outfit photos and I got really inspired from that. एंड ऑल्सो मेरे पास एक ब्रालेट भी रखा था, सो आई वॉज थिंकिंग कि चलो वाई नॉट एक्सपेरिमेंट विद दिस. सो येस, आई टुक सम इंस्पिरेशन फ्रॉम दीज एंड आई क्रिएटेड समथिंग which I'm going to put some clips and you can see on your own that how I created that. Before moving to the process, let me show you how it turned out. So मैंने ना इसको इतना प्रिजर्व करके रखा है, I don't know why. एक तो ना इसके ब्लिंक्स बार बार निकल रहे हैं and I really have to fix it. तो ये है हमारा ब्रालेट. I can't believe I created this. We have to wear it like this, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे. थोड़ी सी राइनस्टोन्स यहाँ से निकल गए आई थिंक. मुझे वो फिक्स करने हैं. हाँ, वो उसमें पड़े हुए हैं, तो वो मेरे को फिक्स करने हैं. सो चलो लेट्स सी हाउ आई क्रिएटेड इट. चलो बना तो लिया टॉप. अब लेट्स सी हाउ कैन आई स्टाइल दिस. सो आई थॉट ऑफ स्टाइलिंग इट इन 3 ways and let me show you how I styled it. So now in the first look I have paired this bralette top with cargo pants. These are the grey cargo pants which I purchased from Urbanic and अगर आपने मेरी Urbanic haul नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. Don't forget to check out. So now to combine it with top's color, I am wearing this black heel, carrying this black bag, also accessorizing it little bit with this hoop earrings, and these are the silver hoop earrings with the silver ring. I really love this ring. So this is all about the first look. I was feeling comfortable. Now moving ahead to our second look. In this look I have styled thoda sa casually. So I am wearing this white t-shirt beneath the top. This was actually enhancing the bralette. So yes, so I'm styling it with this white leg blue denims and this is distressed denim. I really love this denim. So already इसके neck पे drama है, so I don't want it to create any drama. So मैंने इसमें कोई एक्सट्रीम स्टाइल नहीं किया, सिर्फ ये रिंग की है and carrying this black bag with black heels, and that's all about the second look. So coming to our last look, इस look में मैंने इसको Indian way में style किया है and I'm wearing this sari. Don't judge me guys, I don't know how to tie the sari, so please don't judge me. So yes, I'm wearing this red and black sari. सो मेरे पास वाइट और ब्लैक साड़ी भी है. जब मैंने वाइट और ब्लैक ड्रेप किया तो आई वॉज नॉट फीलिंग कि मैंने कुछ नया इसमें ऐड किया है, तो इसलिए आई एम गोइंग फॉर विद दिस रेड एंड ब्लैक साड़ी. तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन साड़ी. इसको मैंने रेड स्टेटमेंट इयररिंग्स के साथ स्टाइल किया है. तो येस, अगेन आई एम वेयरिंग द सिल्वर रिंग विद ब्लैक बैग एंड ब्लैक हील. So this look was giving me that Kamolika wali vibe and I was in that element. So yeah, that's all about the video. I know this video is little bit short than my usual videos. I hope you like this video. If you liked it, just don't forget to like, subscribe and follow me on Instagram also. Also do let me know which look did you like and what do you think, I did justice to bralette or not. So do let me know in the comment section. Till then, bye bye, take care, love you all.